Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is Wednesday, and we are here with the Hindu analysis of Wednesday. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start our session. ओके तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था yesterday भी, we have discussed about these terms like global north, global south and all. So PM Modi said BRICS is a platform for a global south, says PM Modi. अच्छा आप बताओ, because if you are following my news, if you are following my analysis for the past few days, you are aware of this. What is the meaning of the term global south here? इसका क्या मतलब है बताइए लाइव चैट में. What does it signify? इसका क्या मतलब, ग्लोबल साउथ का क्या मतलब हुआ? Please answer it in the live chat. I am waiting for the answers. दूसरा है Chandrayaan 3 lander all set for touchdown today. I hope you are aware of Chandrayaan 3. Which is very much in the news. So we'll be discussing about that as well. Chalo. So let's start with BRICS. So BRICS starts for what? Stands for Brazil, Russia, India, China, South Africa. Now, कहाँ मीटिंग होने जा रही है बताइए तो. वेयर एक्चुअली ब्रिक्स समिट इज गोइंग टू हैपन. यस, ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग नेशंस है ना. एंड विच ऑफ द लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन दैट डिवाइड्स ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ? उस लाइन का नाम क्या है बताइए. ओके, सो ब्रिक्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ, सेज पीएम मोदी. Prime Minister reaches Johannesburg, takes part in leaders retreated, attended by President Xi Jinping, 𝗟𝗏 𝗴𝗏 𝗟𝗏 and all. So actually PM Modi visited there, and he said it's a platform for global south. Now what is the meaning of that? Let me tell you. हाँ, यहाँ से एक line गुजरती है. This line is called as Brandt line. Yes, very good. 𝗟𝗏𝗴𝗏, good. हाँ, Rashmikant, yes. Brandt line. Okay, which divides, this is actually a theory given in 1980s by William Brandt and all. So the global north is here, global south is here. अब BRICS के जितने भी countries देखोगे, so Brazil is here, Russia is here, India is here, China is here, South Africa is there. So except Russia, बाकी सारे global north है ना, उस global south है ना. So except Russia, all the rest 4 countries are actually from global south region, right? So you can say it's very, yes, almost, except Russia, all the other countries actually represents global south, है ना. So that is what PM Modi said. So actually he reached Johannesburg. The actually yes, कई सारे लोगों ने लिखा yes. Sorry. So Johannesburg is actually a place in South Africa where the meeting is going to happen. Okay, yes, आप देख सकते हो है ना. Takes part in leaders retreat, attended President Xi Jinping, 𝗟𝗏 𝗴𝗏 Vladimir Putin. So Vladimir Putin will be joining through video conferencing. So Vladimir Putin, the Russian president, will not come physically. I hope you are aware. So Brazil, Russia, India, China, South Africa. तो रशिया की जो president है, he will be joining it through video conferencing. Why? कोई बता सकता है? There are a lot of reasons. One reason which was very much in the news is because of International Criminal Court, है ना. Actually इस तरह की आर्टिकल आ रही थी. Putin will not attend BRICS summit in South Africa as ICC arrest warrant overshadows key talks. So basically ICC यहाँ पर मतलब वो क्रिकेट वाला नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे मतलब हुआ, ठीक है. इट्स नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो वाला नहीं है ये, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये, ठीक है. यस, सो देखो ये ICC के वेबसाइट से ट्राइंग इंडिविजुअल्स फॉर जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड एग्रेशन. ओके, सो सिचुएशन इन यूक्रेन, ICC जजेस इशूज वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन, लिखा है देखो, ये उन्हीं की वेबसाइट से मैंने लिया है. Okay, now, so first of all, please tell me where is the headquarter of ICC, International Criminal Court? Your options are New York, The Hague, Washington DC, Paris. What is the right answer? International Criminal Court का headquarter कहाँ है आपको बताना है. Yes, very good, Gauri. हाँ. So actually international ICJ का भी headquarter जो वो The Hague में, ICC का भी headquarter The Hague में. बिल्डिंग अलग अलग है हालांकि. सो द राइट आंसर इज बी, द हेग, विच इज सिटी इन विच कंट्री. कौन से कंट्री मिलेगा? यस, नेदरलैंड. हाँ, सो इट्स एक्चुअली इन नेदरलैंड. अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज हॉलैंड, इसी का पुराना नाम हॉलैंड भी है, ठीक है. ऑरेंज कलर का ड्रेस होता है स्पोर्ट्स में जनरली, आपने देखा होगा. हाँ, यस, बी इज द राइट आंसर. यस, पुरंजलि, जिया, यश, सुष्मिता, गौरी, यस, यू आर राइट. द हेग, नेदरलैंड, ये उसकी फोटो है, ठीक है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट.
And let me show you where exactly it is. So here is India, this is Europe, and somewhere here you will find this Netherlands with the Hague जगह, ठीक है, where you will find this. Okay. हाँ, founded by Rome Statute. Very good Pranjali. So ये Rome Statute के जो signatory हैं वो green वाला जो है, ठीक है. So Rome Statute was there, which actually led to the establishment of ICC, International Criminal Court. So अगर आप देखोगे गौर से, here is South Africa. Green ones are actually the parties. तो South Africa is actually a party to it. ठीक है. Red one is not a state party. देखो जैसे इंडिया जो है नहीं साइन किया ICC. So no issue with that. चाइना भी नहीं साइन किया है. Other nations are also not signed. कजाकिस्तान ने भी नहीं साइन किया. इंडोनेशिया ने भी नहीं साइन किया. But green ones जैसे साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज, पूरा इंटायर लैटिन अमेरिका है, कनाडा है ना, ग्रीनलैंड है, they have signed it. और ऑरेंज वाला सिग्नेटरी बट विड्रू इट. तो रशिया जो था अर्लियर इट वाज अ सिग्नेटरी बट लेटर इट विड्रू फ्रॉम आईसीसी. ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए. वाई नेदरलैंड, मानो भी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये, ठीक है. इट हैज नथिंग टू डू विद ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ. ठीक है, ओके. हाँ, साउथ अफ्रीका हैज 3 कैपिटल. सऊदी अरब में नहीं किया है. हाँ, रेड वाला सऊदी अरब, इट हैज आल्सो नॉट साइंड इट. यस, ओके. चलो, so that is what is being talked about. Then let's move on. So BRICS grouping has become a platform for discussing challenges facing global south. PM Modi said before leaving for South Africa he is expected to meet Xi Jinping. So he will be meeting Xi Jinping, president of China. Then since their brief encounter at G20 meeting. Last year Bali में थोड़ा सा short मुलाकात हुई थी. Then further there will be a talk and all. ठीक है, so ये सब बात हो रही. So इसके आगे न्यूज आएगा और तभी हम लोग जानेंगे. इसमें nothing to go much in detail. So he actually landed in 𝗟𝗲𝗴𝗹 base which is actually in South Africa and all. ये इसकी फोटो है. ठीक है, वही सब फोटो है. ठीक है, just have an idea. Okay, so president of Brazil is Lula da Silva. Russian president is Vladimir Putin. Indian prime minister is there. Then China's president is there. And Cyril Ramaphosa is South Africa's president. तो ये सारे लीडर याद होने चाहिए. मतलब याद है, just have an idea. Because these are the leaders that is participating, and this one is participating through VC, मतलब video conferencing. The other ones will be arriving physically. Okay. 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 Yes. Chandrayaan 3 lander all set for touchdown today. So basically Chandrayaan 3 is coming very much in the news. 14 जुलाई को launch हुआ था, 15 से 25 जुलाई को orbit raising maneuver हुआ था. ये सब चीज, these are the things in the news. ठीक है. Lander separates from propulsion and 23rd को आज most likely somewhere around 5:45 से 6:04 PM तक evening में there will be a news about it and all. ठीक है, तो ये सब बात हुई है. 4 years after a predecessor crashed, actually 2019 के अगस्त सितंबर के आसपास की बात है. चंद्रयान 2 predecessor मतलब इससे पहले वाला, before it, है ना. So Chandrayaan 2 actually attempted landing, but unfortunately at the last moment it was not successful. So that is what is being talked about. After its predecessor crash, predecessor में तो इससे पहले जो आया था, है ना. So ये बात हो रही. So around 5:40 PM the mission operation complex at ISRO telemetry tracking and command network Bangalore will initiate powered descent of the lander module. ठीक है, so just have an idea about it, है ना. Now what is the name of the rover being sent by Chandrayaan 3? Your options are Vikram, Pragyan, Kalam, Bhabha. What is the right answer? बताइए. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. वी आर सीइंग ओनली 5 लाइक्स, 25 इज वाचिंग. सो सबको लाइक बटन प्रेस कर दो एक बार फटाफट. नेम ऑफ रोवर बीइंग सेंट बाय चंद्रयान 3. नेम ऑफ रोवर पूछ रहा हूं. यस, ऑप्शन बी. देखो विक्रम जो वो लैंडर है और रोवर जो है प्रज्ञान है. सो हियर बी इज द राइट आंसर. यस, काफी सारे लोगों ने आंसर किया. वेरी गुड. तो आप देख सकते हो, है ना, विक्रम लैंडर, है ना. देखो ये वाला, इसको लैंडर कहते हैं, जैसे ऐसे जाके लैंड कर जाएगा इसमें. ठीक है, इसका नाम है विक्रम. ओके, अब इसके अंदर से निकलता है. ठीक है, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, दिस वन, ऐसे कुछ ये ओपन होता है इस तरह समथिंग. ठीक है, वो तो वीडियो आएगी उसकी, उसमें से फिर ये निकलेगा वो, ये दिस वन उसके अंदर से निकलता है. ठीक है, तो दिस इज रोवर. इसमें चक्का लगा हुआ है. सो इट कैन मूव ऑन द सर्फेस. ठीक है, और सोलर पैनल वगैरह इसलिए लगे होते हैं ताकि सनलाइट एब्जॉर्ब करे एंड इट कैन थ्रू द इट कैन मींस इट कैन वर्क. इट कैन कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी फॉर एक्चुअली मूवमेंट एंड ऑल. ठीक है, इसमें बहुत सारा सोलर पैनल लगाता है. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया. ये लैंडर है, ये रोवर उसी के अंदर से निकलेगा. कल एक और न्यूज आ रही थी. सो इसरो मे पोस्टपोन सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून टू अगस्त 27 बेस्ड ऑन हेल्थ ऑफ फॉर लैंडर मॉड्यूल.
तो हो सकता है आज ना हो, शायद 27 को, तो लास्ट मोमेंट पे ही पता चलेगा, ठीक है। सो मे बी इट माइट बी डिलेड बाई 3 or 4 days. सो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ ऑफ लैंडर एंड ऑल, तो मतलब उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से विल गेट टू नो, ठीक है। बाय द इवनिंग मोस्ट लाइकली विल गेट टू नो। इट हैज 3 कैमराज, हाँ होंगे, नाव कैमराज है और भी बहुत सारे कैमरा, देख लेना कितने कैमरा लगे, ठीक है। ओके, मणिपुर असेंबली टू कन्वीन ऑन August 29, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली और सॉरी कैबिनेट gave up actually advice to governor to bring this to call the assembly, but it did not happen. Now she has decided to call on 29th August, ठीक है। So just have an idea about it, ठीक है। Okay, so 60 members, so total 60 MLAs are there in Manipur, just have an idea about it, okay। So 10 Kuki MLAs including 7 of the ruling BJP are unlikely to attend, so these 10 Kuki MLAs might not be attending it because of security reasons and all, that is what is being cited. हाँ, ये सब लोगों ने कल डिस्कस किया भी था, so not इतना डिटेल नहीं जाना। Inflation pressure may linger but food prices to ease soon. तो चूंकि I hope you are aware कि in food inflation especially is actually increasing, especially आपने सुना होगा टोमेटो का प्राइस बढ़ गया and all, so there were fears of onion also. तो खैर ये सब चीजें हैं। तो इंडियाज इन्फ्लेशन वोज आर नॉट, वोज मतलब परेशानी ना, वोज परेशानी, पेन, आर नॉट ओवर येट बट फूड प्राइस स्पाइक्स मे बी ट्रांजिटरी, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड, मतलब हो सकता है कि कुछ दिन में ठीक हो जाए। सो व्हाट आर द इश्यूज? मेन इज एज पर द FAO फूड इन्फ्लेशन शोड एन अपटिक इन जुलाई, सो द फूड इन्फ्लेशन गॉट इंक्रीज्ड. टर्मिनेशन ऑफ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव वाज कैन बी वन ऑफ द रीजन, देयर आर अदर रीजंस एज वेल, ठीक है। Interruption in supply chain of tomatoes due to white fly disease in Kolar, क्योंकि एक बीमारी है white fly disease, इससे भी असर हुआ। So it's a disease which actually affects maybe the monsoon crops and all, ठीक है। Termination of black sea green initiative हम लोगों ने किया था, we have discussed it कि लास्ट ईयर जुलाई से इस साल जुलाई तक, जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक। सो रशिया अग्रीड, रशिया यूक्रेन और टर्की के बीच एग्रीमेंट था कि इट विल अलाउ यूक्रेन फूड ग्रेन एक्सपोर्ट, है ना। सो दिस इज ब्लैक सी, so that's called as Black Sea Grain Initiative. But now in July this year, the Russia has withdrawn from this agreement, है ना? So that is what is being talked about. So this also might have led to the increase in food inflation and all. तो ये सब पता होना चाहिए। Sir, index all I need to remember, नहीं सारा नहीं याद रखना है, but famous ones you should remember, हाँ, because question आया हुआ एक बार इंडेक्स से, रैंकिंग पूछा था इंडिया की, इंडियाज रैंकिंग, ठीक है। They have asked it once, so of course the famous one, the important ones आपको पता होना चाहिए। ओके, नासा ESA, नासा मतलब नासा इज US स्पेस एजेंसी और ESA है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, है ना, विच इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, ठीक है। सो दे हैव डिसाइडेड टू सपोर्ट इसरो ड्यूरिंग मून लैंडिंग टुडे, सो दे विल बी हेल्पिंग, है ना, अगर कोई जरूरत होगी तो। दैट इज व्हाट इट वाज इन द न्यूज़, ओके, ठीक है, हाँ, ओके। बिफोर मूविंग ऑन गाइस, दिस इज अ टेस्ट सीरीज, 2024 लॉ यूजी का टेस्ट सीरीज है, 25 CLAT, 15 ALET, 15 OLET मॉक टेस्ट इज देयर. If you have any question, call on this number 9538895678. And this is a crash course also we are running. You can go for this crash course. And this is 2025 comprehensive course, 380 plus live hour session, 300 plus recorded videos, etc. are being provided. If you have any question, call on this number 9538895678. Okay, let's talk about this one, editorial. देखो ये काफी important, strong case to restore section 8 clause 4 of representation of people's act, ठीक है। इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू हैव रेड इट यू कैन इजीली आंसर इट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट? योर ऑप्शंस आर कियोतो होलोआन केस, लिली थॉमस केस, ADR केस, PUCL केस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑथर जो है वो बात कर रहे हैं कि इसको वापस लाना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सो कौन सा, ये हम लोग सब पढ़ाए हुए हैं, आई हैव डिस्कस दीज थिंग्स। देखो अपना आंसर देखो, दूसरे कॉपी करके ना लिखना। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यस गौरी, यू आर राइट। प्रांजलि, सानिया अंसारी, नामरा गौरी, यस यू आर राइट। हाँ लीजिए आओ। लिली थॉमस केस अगर फर्स्ट पैसेज में का यहाँ मेंशन्ड है, लिली थॉमस केस फर्स्ट लाइन में, अगर आपने रीड किया होगा तो शुरू ही की तीसरी चौथी लाइन में। ओके, so just have an idea. Mr. Rahul Gandhi's disqualification. देखो, he is a former Secretary General of Lok Sabha. He has written this article. So he is talking about Lily Thomas case, which struck down section 8 clause 4, which gave 3-month time period to appeal
द कन्विक्शन एंड ऑल। तो देखो होता यह है कि सेक्शन 8 क्लॉज 3A में लिखा है, इफ ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ पनिशमेंट विच इज मिनिमम 2 years, अगर 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा है, ओके, सो ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग MP और MLA। ठीक है, ये लिखा था 8 क्लॉज 3 में। लेकिन 8 क्लॉज 4 में एक प्रोविजन था, उसी के अगले वाले प्रोविजन में, सेक्शन 8 क्लॉज 4 में, यू विल बी गेटिंग 3 months टाइम। If you have been found guilty and the jail term is more than 2 years, you can appeal in High Court or Supreme Court, and if the sentence is stayed, then your membership being an MP or MLA will not be lost. अगर उन्होंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो फिर आपकी एमपीशिप या एमएलएशिप नहीं जाएगी। बट दिस कॉन्सेप्ट वाज रिमूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस केस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि द मोमेंट अ लोअर कोर्ट फाइंड समवन गिल्टी ऑफ मोर देन 2 years in jail, finds guilty means find someone guilty of convicted and given a jail term of more than equal to 2 years, then the MP or MLA automatically gets disqualified, which is the case with Rahul Gandhi. Okay, तो ये इसके अगेंस्ट है। ये मतलब ऑथर कहना चाह रहे हैं, द ऑथर इज सेइंग दैट ही वांट्स टू गेट बैक सेक्शन 8 क्लॉज 4। सो ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। This according to the opinion of some of the experts, setting is disqualified the moment, हाँ, तो the moment he is found guilty, he is disqualified from being MP or MLA. ओके, तो इसमें ही इज वाइज अपोजिंग इट, आई विल टेल यू। ठीक है, सो द टॉप कोर्ट सेड आर्टिकल 102 डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन सिटिंग एमएलए एंड ऑल। सो वही सुप्रीम कोर्ट का कुछ आर्ग्यूमेंट्स था दैट 102 सेज यस, दिस इज 102 टॉकिंग अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें यह है कि कॉमन मैन और एमपी एमएलए में कोई डिफरेंस नहीं है। सो इफ यू आर फाउंड गिल्टी यू शुड बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड। व्हाई शुड यू बी गिवन 3 months? ओके, टाइम। लेकिन उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि एमपी और एमएलए अगर मान लीजिए हटा दी गए, इफ ही इज फाउंड, इफ अ पर्सन हैज बीन डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली, देन द कंस्टिट्यूएंसी सफर्स। ये अभी रिसेंटली किसी जज ने भी कहा था ये बात, मतलब कि इफ अ पर्सन हैज बीन फाउंड, लेट्स से मिस्टर राहुल गांधी रिमूव फ्रॉम बीइंग द लोकसभा एमपी, तो वायनाड में देयर विल नॉट बी एनी नो एमपी। ठीक है, तो कोई भी एमपी नहीं बचेगा एटलीस्ट 2, 3, 4, 5, 6 महीना के लिए, तो है ना। So that is, I mean, the constituency of the Wayanad will get affected if there is no MP and all. Okay, so that is also the argument and all. हाँ, फिर वो 103 की बात कर रहे हैं। I'll tell you about that. So opinion of this Statute which was expressed in the few article is that according to 103, president should have been the disqualifying authority. अब होता क्या, the moment let's say a person is found guilty of 2 years jail, so if he is a Lok Sabha MP, he will be disqualified by speaker. So he is saying that instead of speaker, it should be the president who should remove, because that is what the idea of article 103 is. ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि स्पीकर की जगह प्रेसिडेंट होना चाहिए रिमूव करने के लिए या डिस्क्वालीफाई करने के लिए। दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, then a question of legal importance that arose in the context of disqualification was whether the state's only sentence can lift disqualification. तो अब इसमें वो डिटेल में जा रहे, इतना डिटेल आपके काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब यही था मेन चीज कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 की वजह से नाउ यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड द मोमेंट ही और शी इज फाउंड गिल्टी ऑफ आई मीन कन्विक्टेड in any case where the jail term is more than equal to 2 years, है ना। It must be remembered that disqualification arises only when the sentence is imprisonment of 2 or more years. हाँ, तो ये लिखा 2 या 2 से ज्यादा साल, अगर कोई 1 साल की सजा मिली तो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं होगा, है ना। So that is what is being talked about. तो वही बता रहे हैं कि लिली थॉमस केस से ना हैवॉक क्रिएट हो गया। हैवॉक इन द सेंस कि the moment a person is found guilty and the jail term is more than 2 years, immediately the MP or MLA is disqualified. So the vacancy gets created. And the constituency suffers in general. That is what is being talked. तो वही 103 बता रहे हैं कि president shall be the deciding authority. So he is saying that it should be the president who should disqualify and not the speaker. ठीक है, वही सब बात है। इसको सारा आर्गुमेंट बताया, ये सब मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब देखो बता ये रहे कि in fact the judgment has not resulted in perceptible qualitative change. तो क्या ये सब जजमेंट से कुछ बेनिफिट हुआ? Has there been any improvement? Okay. Now the thing is कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है? सो एक्चुअली देखो जैसे एडीआर केस 43% न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एमपी 2009 में जब नया न्यू इलेक्शन हैपेंड, सो इट सेड कि 43% न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एमपीज हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो शायद उतना कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ ये सब जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड अ लॉट ऑफ ऑर्डर रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ओके,
but we have not seen much effective actually as far as practicality is concerned. अभी भी इतने सारे लोगों के पास criminal cases and they have been elected as Lok Sabha MPs and all. That is what is being talked about. The next one is festering wounds. This we are talking about Manipur. We have already discussed it that for the past 3 years we are witnessing ethnic violence and all that broke out in Manipur. There are still no signs of lasting peace. Okay, recently we have seen some issues between Assam Rifles and the state police, and we have seen FIRs being filed by police against Assam Rifles for obstructing the discharging duties and all. So these were the things that is we have already discussed these things. So इसमें वो ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है. So the one side is 𝗞hy, another side is cookies or leaders. So that is what you should be knowing. Okay, now एक है no bulwark for Pakistan's minorities. I hope you are aware. Actually, this is written by Mr. K.M. C.T. देखो ये actually news में था. What happened was there's a place called Faisalabad. In Faisalabad, which is actually you will find it here. Let me show you. Here is India. This is Pakistan. ये लाहौर है, इसके वेस्ट में यहाँ पे आपको मिलेगा फैसलाबाद. Okay, in Faisalabad, what happened was a very unfortunate incident happened where actually Pakistani crowd vandalized the church. तोड़फोड़ मचाया, शायद आग वगैरह भी लगा दिया. Torches home. Torches मतलब होता है आग लगाना, fire. After blasphemy accusation. Blasphemy means actually this is a law regarding blasphemy allegation means that if someone is insulting the religion or religious literature, insulting religion. So there were allegations and the people went and mobilized the church and homes and all that was, it was in the news. So ye 𝗟𝗲𝗴𝗹, it's in Faisalabad, setting fire to churches, attacking homes of Christians and vandalizing local assistant commissioner's office and all that was in the news. So the violence followed allegation of blasphemy sparked by the alleged desecration of pages from Quran near a house and all. Desecration मतलब होता है मतलब disrespect करना and all of the Quran and all. So there was an allegation that some of the pages of Quran were actually desecrated near the Christian's house and all. That was in the news, and that is why this actually the crowd started vandalizing the churches and all this was in the news. So what happened was then after that Pakistan authorities arrested 146 people, more than 600,000 people deployed and all. Yeah, 135 लिखा है, 146 लिखा है, maybe whatever it is. Case filed against 600 people and all. So that is what he's talking about. So he's talking about amid rumors. Rumors with the fake news. The situation worsened with the involvement of TLP and all. So these are some. I don't know much about it. These things. So इसको देख लेना what is actually. बहुत detail में नहीं जाना है, but have a basic idea about it. Okay, there are some organizations which supported these things and all. Christian leaders condemned police inertia, asserting that officers stood inactive. But when violence was happening, it was the responsibility of the police and administration to stop it. Senior administrative and police officers intervened and were engaged in discussion with protest leaders. Kuch officers intervened kiye. These are the things being talked about. Then rangers were deployed. So rangers, Pakistani rangers, like paramilitary force, were deployed and additional police personnel were dispatched. Senior police officer was reassigned a duty. इसे बता दें. So obviously in Pakistan the requirement of evidence loses significance when focus shifts to blasphemy and all. मतलब ये होता है कि कोई भी चीज ना evidence based होता है. मतलब सबूत चाहिए होता है ना किसी भी crime का and all. So he's saying कि when the accusation is against blasphemy, the people do not even think of checking, verifying the accounts or verifying the evidence, and these things do happen, thereby setting a path for acts of vigilante justice. तो इसको जो है ना, this is considered as against due process of law. You understand this? या जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. विजिलेंटे जस्टिस क्या होता है? देखो, if a person has committed, there is a person X who has committed a crime, or there is a fear, allegation against him. हो सकता है ये allegation गलत भी हो, allegation. Now, so ideally what will happen? If there is an allegation, serious allegation, then police will arrest this guy, produce it in the court, and after court, judge will be checking all the evidence, the court will punish. ये होता है ना? Okay? तो सजा ऐसे होती है कहीं भी कि विजिलेंटे जस्टिस को हमेशा गलत समझाता है, बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इफ ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी, अगर या इफ ए पर्सन देयर इज एन एलिगेशन ऑफ अगेंस्ट सम पर्सन, ही शुड बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट, एंड द कोर्ट विल चेक ऑल द एविडेंस, वेरीफाई इट, लिसन टू द आर्गुमेंट, दोनों पक्ष का आर्गुमेंट सुनेगा, फिर फैसला सुनाएगा. विजिलेंटे जस्टिस में क्या होता है कि कोई कोर्ट नहीं होता, मॉब की जस्टिस इसको कहते हैं.
ओके, ये डेंजरस क्यों होता है? पहली बात, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सेकंड है कि र्यूमर्स पर बेस्ड होता है कई बार कि किसी ने कुछ बोल दिया, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, कर दिया लोगों ने, एंड इट हैज नॉट बीन वेरीफाइड बेस्ड ऑन, कई बार व्हाट्सएप पे पता नहीं फेक न्यूज आता है, सो दिस इज आल्सो वेरी डेंजरस। हाँ, थर्ड थिंग इज मॉब डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू पनिश एनीवन। अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर देन लॉ एंड ऑर्डर विल बी डिस्ट्रॉयड। यस, सो ऑलवेज रिमेंबर विजिलेंटे जस्टिस विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज बैड because it violates principle of natural justice. It is the responsibility of the court to punish someone, not the mob. ठीक है, अगर किसी को कुछ सजा देगा, जो भी होगा, तो लीगल प्रोसीजर से अदालत सजा देगी, कोई भीड़ तक नहीं सजा दे देगी, because it can, otherwise it will create an anarchy in the country. Okay, so that is what is being talked about here. Rising aggression against Pakistan's minorities has been compounded by revival of terrorist activities. So that is what he's saying. A lot of revival of terrorist activities have happened, and which is actually aggression or attack against Pakistan's minorities. So they're talking about these examples. Okay. For September 2020 example, there are Lahore court handed 𝗟𝗲𝗴𝗹, a young Christian, to death penalty for sending a text message that was blasphemous in content. Then there was another case, 𝗟𝗄 case, बहुत famous हुआ था, I think 2018, 17, 18 में. So that was also being talked about here. So that is what it is. So he's giving some examples, past examples as well. Okay, now section 295, 298 of Pakistan's penal code talks about the punishment regarding actually blasphemy. Okay, so the desecration of Quran, the Prophet, places of worship, religious symbol as criminal offense and all. So that is what these ambiguous. So according to the author, the clauses are quite ambiguous, मतलब vague है, not very clear. ये इनके इसका मतलब हुआ, ठीक है, ambiguous है, मतलब इसमें इतना क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीज किस में आएगी. ओके, सो दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर. और ऑफर एक्सप्लॉइटेड टू जस्ट एक्यूज द अहमदी, शियाज, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड ऑल. सो मतलब कई बार इसका मिसयूज किया जाता है. यू कैन से ही से कि दीज क्लॉजेस आर समटाइम्स बीइंग मिसयूज्ड to actually punish the people from minorities in Pakistan and all. That is what is being told. Okay, हाँ, yes. किसी ने लिखा ऑडी अल्टरम पार्टम. हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो, दो, एक ऑडी अल्टरम पार्टम, एक है उसका कि लिसन टू द अदर साइड बिफोर पासिंग अ जजमेंट. दोनों पक्ष सुनकर क्या फैसला सुनाइए, ये जज का फर्ज होता है ना. तो यस, समवन हैज रिटन, वेरी गुड. हाँ, यस, हाँ. Okay, so that is what it was in the news. So just have an idea. The next is easing credit flow. इसमें थोड़ा सा बस एक आइडिया होना चाहिए कि RBI has taken some decision which will help actually small business take loans. इस तरह लिखा होगा, देखो ना, छोटे लेवल पर लोन, स्मॉल एंड मार्जिनल बोरोवर्स को हेल्पफुल होगा. मतलब जो छोटे लेवल पर लोन ले रहा है 10,000, 20,000, 20,000, 50,000, ठीक है. बिकॉज देखो होता क्या है कि बिग कॉर्पोरेट्स या बिग बिजनेसमैन को आसानी से लोन मिल जाता है ना, बट स्मॉल बिजनेस को भी तो प्रमोट करना है ना. वी हैव टू इंश्योर दैट इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड. ये डीपीएसपी, अच्छा कहाँ लिखा बताओ तो? वन ऑफ द डीपीएसपी टॉक्स अबाउट मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, इस तरह करके लिखा हुआ है ना, डीपीएसपी है ना. यस, हाँ, एमएसएमई, यस, वेरी गुड. तो जो स्मॉल लेवल बिजनेस है उसको भी प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है. यस, बिकॉज of course the big banks will give loans to big companies and big businessmen, but what about small people, smaller businessmen? तो उनके लिए भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई गई, पब्लिक टेक ट्रांसपोर्ट फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट एंड ऑल. तो ये सब है कि मतलब स्मॉल बिजनेसमैन को प्रमोट करने के लिए ना. और ये बहुत सारी स्कीम है, शायद आई थिंक है ना, पीएम मुद्रा योजना करके है, अदर स्कीम्स, फिर स्वामित्व स्कीम है ना. हाँ, ओके, यस. देन चंद्रयान 3 पर 19 मिनट्स ऑफ सस्पेंस. देखो ये चंद्रयान 3 पर आया है पूरा, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है. तो जैसे LVM-3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसको हम लोग GSLV Mark 3 भी कहते हैं, GSLV Mark 3. ओके, रॉकेट ऑन 14 जुलाई लॉन्च किया गया. इसी के साथ उसके बाद रशिया का लूना 25 लॉन्च किया गया, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. आई होप यू आर अवेयर, ठीक है. फिर रोवर की बात की जा रही है. सो दिस इज रोवर, प्रज्ञान रोवर, वी हैव डिस्कस्ड इट. इसका ये सब वेट उठ नहीं याद रखना है, इतना नहीं पूछेंगे, ठीक है, वेट उठ थोड़ी पूछेंगे. ओके, देन ये सब चीज थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. देखो 40% ऑफ मून मिशन हैव फेल्ड, यानी सक्सेस की गारंटी थोड़ा कम है, इतना आसान भी नहीं है. आप समझो, अमंग रोबोटिक लैंडर की अगर बात है तब तो फेलियर रेट है 60%. आप समझ, यानी 40% सक्सेस का चांस है अगर रोबोटिक लैंडर यूज करे, इसीलिए बहुत ज्यादा फेल करता है ये वाला मिशन. ओके, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकता है कि क्यों ये इतना सक्सेसफुल नहीं है. सैंपल रिटर्न मिशन व्हिच कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द मून ब्रिंग देम बैक टू द अर्थ आर इवन हार्डर विद अ फेलियर ऑफ 67%. अच्छा,
आप समझ हो, जैसे वहां गया लैंड किया, ठीक है, अब उसमें से क्या करें, जैसे रोवर है, इसमें सैंपल उठाएगा, है ना, जैसे मून है, मून पर का जो सैंपल है मतलब रॉक्स का कुछ हिस्सा होगा, उठा के लाएगा, ला के वापस लाना, इट्स वेरी टफ जॉब, ठीक है। 67% से फेलियर है, यानी 33% चांस है सक्सेस का, ठीक है। तो उसका कुछ रीजन होगा, मतलब इतना डिटेल तो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, बट यस बिकॉज इट्स अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ये सब ठीक है, देख लो, फिर 3 कंट्रीज, अभी तक 3 कंट्री ने ऐसा काम किया है, यूएस, रशिया एंड चाइना ने। सो इफ विल डू इट, विल बी बिकमिंग द 4th वन, है ना। ओनली 3 कंट्रीज हैव सॉफ्ट लैंडेड रोबोट। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ये होता है जैसे ये मून का सरफेस है तो आराम से जाके लैंड कर देना ना, दैट्स कॉल्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, तो 3 कंट्री ने किया, इंडिया विल बिकम द 4th होपफुली, है ना। ओके, अंडरस्टैंडिंग द फेलियर ऑफ लूना 25, ठीक है। इसमें भी अब इतना डिटेल नहीं जाना है, बस इतना पता होना चाहिए कि दिस इज रॉसकॉस्मॉस इज एक्चुअली द रशियन स्पेस एजेंसी व्हिच हैज लॉन्च्ड इट ऑन बोर्ड सोयूज 2 एयरक्राफ्ट का नाम है सोयूज 2, ठीक है। एंड द मिशन नेम वाज लूना 25 व्हिच अनफॉर्चुनेटली वाज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, अब वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, तो कमेंट करना बेहतर नहीं है, बट व्हाट दे हैव सेड, उन्होंने कहा है कि बिकॉज ऑफ सम a committee to investigate, beyond that it only said that it was a technical problem, मतलब उन लोगों के हिसाब से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसके वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो वी शुड नॉट गो इन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन लगाने से कोई फायदा नहीं। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कयास लगाना, मतलब गेस करना, तो गेस उस करना नहीं है हम लोग को, सो वी आर नॉट सपोज टू डू गेसिंग एंड ऑल, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया कि क्या हो गया, रॉसकॉस्मॉस स्पेस एजेंसी है, कौन सा रॉकेट का नाम क्या है ना, लूना 25 मिशन था, जस्ट हैव एन आइडिया। हाँ ओके, फिर है एक और न्यूज था, रूल्स विल बी मेड टू कर्ब वल्गर लैंग्वेज ऑन सोशल मीडिया, गवर्नमेंट सेज। सो दिल्ली हाई कोर्ट हैड अंडरस्टूड द नीड फॉर टेकिंग सीरियसली। हाँ, अब देखो होता क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उसी में ये गवर्नमेंट ने कहा, सी व्हाट हैपेंस इज वी आर सीइंग दिस इज एन एज ऑफ सोशल मीडिया। अब उसमें क्या होता है, इसका रेस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उधर क्या होता है, मतलब a lot of social media creators, they create videos in such a way where actually the bad word, vulgar word or these types of words are there, unparliamentary words are there। तो कई बार गाली गलौज इस तरह के वर्ड्स होते हैं, वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। अब कोई बच्चा है 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, if a small child 6 year, 8 years, 10 year old child is watching it, so that boy or girl will learn these things which is not considered as good, of course। इसीलिए उसको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है, वल्गर लैंग्वेजेस को। Okay, so that is what the government has said. Yes, has assured the Delhi High Court that it will incorporate necessary rules and regulations in future. तो इंश्योर करेंगे, कोशिश करेंगे कि नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाए, गवर्नमेंट ऐसा कहा है, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी, ओटीटी प्लेटफॉर्म समझते हो कि अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये सब होता है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। ओके, कॉजिंग फ्लड इज अ टेररिस्ट ऑफेंस इन लॉ और प्रपोज टू रिप्लेस इंडियन पेनल कोड। आपको पता है आईपीसी की जगह अब आ जाएगा बीएनएस, है ना, भारतीय न्याय संहिता, है ना। तो उस समय ये लिखा हुआ है, इसी की बात कर रहे हैं, दैट कॉजिंग फ्लड इज अ टेररिस्ट ऑफेंस नाउ, ठीक है। अगर ये बिल पास हो जाए भारतीय न्याय संहिता, तो इसमें वो सारी चीज दिखाना है कि पर्सन हु डेवलप्स, मैन्युफैक्चर, पोसेस, एक्वायर्स, ट्रांसपोर्ट, सप्लाइज एक्सप्लोसिव्स, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस और लिखा कॉज फायर, फ्लड्स और एक्सप्लोजन, उसके कारण अगर आग लग जाए या फ्लड आ जाए, हो सकता ना, सो दैट कैन ऑल्सो बी the reason he or she can be tried against terrorist laws and all. Okay, so just have an idea about it. फिर एक और था, गोयल urges onion growers not to go for panicking. Actually क्या हुआ, recently the government has announced 40% export duty लगा दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, export will be costly and the farmers will not be exporting, they will be selling it in our own country। क्यों, इसलिए कि there were some fears कि maybe onion prices might increase in India, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये सब किया गया, ठीक है। सो मिस्टर गोयल इज एक्चुअली द कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही सेड कि नथिंग टू पैनिक होने का नहीं है, ओके, ठीक है ना। हाँ ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट वन कैन यूज सोशल मीडिया ओनली आफ्टर 15 years। यस, यू आर राइट। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 15 सोशल मीडिया का कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, 15 साल, 18 साल, देयर लॉट ऑफ रूल्स, बट स्टिल इसको इंप्लीमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। हर आदमी को जाके इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बच्चा है, हाँ, अगर 10 साल का यूज कर रहा है, तो कैसे गवर्नमेंट कहाँ किसको किसको पकड़ेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली रेगुलेट इट। सो रेगुलेशन सप्लाई साइड से ही हो सकता है
कि वहीं पे रोक दिया जाए कि वो कंटेंट जाए ही नहीं. ओके, सो देयर हैज टू बी सम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट कुछ समथिंग से कि कोई भी अगर अब्यूसिव कंटेंट है तो अपने आप ब्लॉक हो जाए ऑटोमेटिकली, समथिंग लाइक दैट, है ना, कैन बी डन होगा. ओके, खैर उसमें डिबेट है, अब इसमें इतना डिबेट में नहीं जाना, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन डिबेट. ओके, द नेक्स्ट इज थाई पार्लियामेंट इलेक्शन. ये याद रखना चाहिए, न्यू प्राइम मिनिस्टर का नाम है 𝗟𝗏𝗴𝗃, जस्ट हैव एन आइडिया, ठीक है, ये नाम बस इनका याद रखिएगा. सो इज द न्यू पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, 𝗟𝗏𝗴𝗃. ओके, जस्ट रिमेंबर इट. ओके, यस, here is India, this is Thailand, the capital is Bangkok. It's a very famous place, है ना. Okay, so this is all about today's class. You can download our app, go to CLAT section, you will get up to 3-day free trial on this course. Thank you everyone, thanks for watching. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thanks for watching, have a nice day. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन.